Assalamu alaikum and a very happy good morning to all of you. And I hope everybody's fine. And I hope everybody had a great start to the weekend. Welcome to the ECL Studio, episode 2. And in today's panel, we have got an expert, uh, one of the most experienced teacher, uh, Sir Amar Suhail. Assalamu alaikum, sir. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि Sir, वबरकातुहू कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन शुक्र All अल्हम्दुलिल्लाह right. On the other side, we have got the one and only Hamid Talash. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam, respected sir. Salam to you and salam to respected sir Amar. And assalamu alaikum and walaikum assalam to all the viewers who are watching us from the ESL studio. Walaikum assalam, sir. And I hope you're also doing well. Thanks to Sir, Allah. the topic that we are going to discuss today is the class management of EFL students and their language barriers. सबसे पहले तो सर कुछ क्वेश्चंस किए थे हमारे स्टूडेंट्स ने लास्ट एपिसोड में जो कि हम आंसर ना कर पाए शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से तो उसमें ये एक क्वेश्चन था कि जब एक बच्चा आता है नया इंग्लिश सीखने के लिए तो उसको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, कैसे उसको जो है अपनी ये इंग्लिश लैंग्वेज की जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे पहले मैं अमर सुहेल साहब से उनकी राय लेना चाहूँगा। सर, आपकी क्या राय है, कैसे एक स्टूडेंट आए और वो कैसे अपनी जर्नी को स्टार्ट करे, जरा बताइए इसके बारे में प्लीज। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। और सेकेंडली आपका जो क्वेश्चन है, आपने जो क्वेश्चन पूछा, आई डेफिनेटली वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट ऑल्सो। जब भी हम कोई स्टडी करते हैं, जब भी हम कहीं पे कोई एजुकेशन हासिल करते हैं, एजुकेशन को हासिल करने के 3 तरीके होते हैं। बल्कि 2 किस्म की एजुकेशन है। एक हमारी एकेडमिक एजुकेशन होती है, जो हमारी एकेडमिक स्टडीज़ होती है, एनी काइंड ऑफ एकेडमिक स्टडीज़ जो कॉलेज में या स्कूल में या यूनिवर्सिटी में कंप्लीट करते हैं। दूसरी जो हमारी टाइप ऑफ एजुकेशन होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज द प्रोफेशनल। अब अगर आप अपनी एकेडमिक एजुकेशन को देखें या आप अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन को देखें, तो ये एकेडमिक एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन, ये दोनों जो हैं, दे आर ऑल इंटरलिंक्ड। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप कहीं पर एकेडमिक स्टडीज़ करते हैं, तो एकेडमिक स्टडीज़ का मतलब ये होता है कि आप स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेशनल स्टडी को आप प्रॉपरली कैरी ऑन, ठीक है। फिर उसी के साथ आप अपनी प्रोफेशनल स्टडीज़, जिसमें आप एकेडमिक स्किल से हटकर थोड़ा सा अपनी प्रोफेशनल स्टडीज़ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आप इम्प्लीमेंट करें। इसको मैं ज़्यादा आसान तरीके से ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स है, हमारी कंप्यूटर साइंसेस की स्किल्स है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की स्किल्स है, जो हमारी ये तमाम लेवल की स्किल्स हैं, इन लेवल की स्किल्स को एक्वायर करने के लिए सबसे पहले द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू लर्न इज द जनरल लेवल ऑफ एजुकेशन। अब ये जनरल लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है? द जनरल लेवल ऑफ एजुकेशन इज द बेसिक एजुकेशन दैट वी गेट एट और वी गेट एट द बिगिनर्स क्लासेस। ये जो बिगिनर्स क्लासेस होती हैं या जो हमारी एकेडमिक स्टडीज़ की जो ये प्रोफेशनल स्टडीज़ होती हैं, इसके अंदर रहते हुए जब हमारी स्टडीज स्टार्ट होती है या हम अपनी स्टडीज को कैरी ऑन करते हैं, तो उसके लिए द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो इज हाउ कैन वी मेक आवर एनवायरनमेंट कंफर्टेबल। यूजुअली जब हमारे स्टूडेंट्स या हमारे जो लर्नर्स होते हैं वो किसी भी लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं, तो उनकी जो लर्निंग एनवायरनमेंट है, वो लर्निंग एनवायरनमेंट स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है, बहुत ज़्यादा टेंस्ड होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। वजूहात क्या है? वजूहात ये है कि सबसे पहले वो जो स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट जब अपने एक एनवायरनमेंट में इंटर होता है, तो इंटर होने के साथ ही उसको ये समझ नहीं आ रही होती कि मेरा इस एनवायरनमेंट में जो एक किरदार है, वो किरदार मतलब स्टूडेंट एट दैट टाइम, I'd rather call in English का बड़ा खूबसूरत प्रोवर्ब है that is called as the spring chicken. So he acts like a spring chicken who runs here and there in search of water, but there is no water. एग्जाम्पल जो हमारे पास, ऐसे स्टूडेंट को क्लासरूम के अंदर जनरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, जिसके अंदर वो जनरल डिस्कशंस के थ्रू, जिसमें वो हाय हेलो के थ्रू
وہ سب سے پہلے انٹر ہوتا ہے, انٹر ہوتے ساتھ ہی وہ اپنا ایک انگلش کا ایک ورڈ ہے لیزون, وہ اپنا لیزون کریٹ کرتا ہے. کس کے ساتھ؟ 3 چیزوں کے ساتھ. سب سے پہلا وہ اپنا لیزون کریٹ کرتا ہے کلاس روم کے انوائرمنٹ کے ساتھ. سیکنڈ, اپنے کلاس روم میں بیٹھے ہوئے اپنے کلاس میٹس کے ساتھ. اور تیسرا, اپنے کلاس روم میں پڑھانے والے اپنے ٹیچر کے ساتھ. جب یہ تمام 3 چیزیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ دس از دا کک اسٹارٹ آف دیٹ ویری مومنٹ ویئر ہز لرننگ اسٹارٹس, اینڈ دیٹ از دا موسٹ easiest or the most difficult, the most technical and the most critical moment, وہاں پہ جہاں پہ اس کو آہستہ آہستہ قدم رکھنا پڑتا ہے تاکہ اس کی لرننگ کریٹ ہو, اور لرننگ کریٹ ہوتے ساتھ ہی وہ اپنی کمیونیکیشن اسکلس کو اسٹارٹ کرے, لرننگ اسٹارٹ کرے. I hope you are understanding. Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. Called as the general studies. اب یہی جنرل اسٹڈیز کو وہ آگے کی طرف لے کر چلتا ہے, اور پھر وہ انٹر ہوتا ہے the second field of learning which is called as the academic studies. اب academic studies کیا ہے؟ academic studies میں وہ یہ لرننگ اسٹارٹ کرتا ہے کہ جو کچھ میں نے لرن کیا, جو کچھ میں نے سیکھا, اس لرننگ کے اندر جو لرننگ کا ریئل نیکٹر ہے, لرننگ کا جو ریئل کرکس ہے وہ کیا ہے, اور اس لرننگ کا جو ریئل کرکس اور ریئل نیکٹر ہے اس کو میں نے کیسے آگے کی طرف لے کر چلوں. اس کی ایگزامپل میں آپ کو اس طریقے سے دوں گا کہ آپ انگلش لینگویج پڑھاتے ہیں کہ جو بکس وغیرہ ہیں, ان بکس میں پری ایلیمنٹری, ایلیمنٹری اور پری اسٹارٹر کی بکس, ان 3 بکس کو اٹھا کر آپ دیکھیں تو اس میں زیادہ تر ٹاپکس, زیادہ تر جتنے بھی ہمارے فنکشنز وغیرہ ہیں, وہ جتنے بھی ریلیٹڈ ہیں سارے کے سارے جنرل اسٹڈیز سے ریلیٹڈ ہیں, جس میں اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ڈیلی روٹین پہ بات کریں, اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے جنرل لائف کے بارے میں بات کریں, اپنے ویکینڈ روٹین کے بارے میں بات کریں, اپنے جو یہ کیا کہتے ہیں اس کو ہالیڈے پلانز ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں, اپنے فیوریٹ کی بات کریں, فیوریٹ مومنٹ آف لائف ٹائم کے بارے میں بات کریں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہیلپ کرتی ہیں اسٹوڈنٹ کو اس کی جنرل لائف اسٹڈی کرنے میں. پھر اس کے بعد جب وہ انٹر ہوتا ہے اپنی اکیڈیمک اسٹڈیز میں, تو اگر آپ بکس کو اٹھائیں دوبارہ, اس بکس میں جو اسٹارٹر, انٹرمیڈیٹ اور ہائر کی یہ 3 بکس ہیں, ان تینوں بکس کے اندر اگر آپ اسٹڈی کریں تو اس اسٹڈی میں آپ کو یہ سمجھنے کو ملے گا کہ اس میں گرامر فوکس کے اوپر لرننگ تھوڑی زیادہ ہے. اس میں ایک نیا فنکشن ایڈ ہو جاتا ہے which is called as the perspectives. تو پرسپیکٹیوز زیادہ ٹیکنیکل ہے. آپ اس کے اندر کانورسیشن کو اٹھا کر چیک کریں تو کانورسیشن بہت زیادہ ٹیکنیکل ہے. اسی طریقے سے اسنیپ شاٹ کو اٹھا کر آپ چیک کریں, اسنیپ شاٹ بہت زیادہ ٹیکنیکل ہے. یہ تمام فنکشنز اکیڈیمک اسٹڈیز کو فروغ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد حامد تلاش صاحب چونکہ پڑھا رہے ہیں کانورسیشن کی کلاسز, تو کانورسیشن کی کلاسز میں جتنا ہے دیٹ از آل پروفیشنل اسٹڈیز. سو کٹنگ اٹ شارٹ, لرننگ کے لیے دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ ہمارے جتنے بھی ٹرینرز ہیں, جتنے بھی ہمارے ایکسپرٹس ہیں, ایکسپرٹس کو یہ چیز سکھانے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان کی جو لیول آف لرننگ ہے وہ لیول آف لرننگ کتنے لیولس کو, اور یہ جو لیول آف لرننگ ہے, جب یہ لیول آف لرننگ ایک بار اسٹارٹ ہو کر کریٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کو ڈلیور کرنا دیٹ از ریئلی ویری امپورٹنٹ, تاکہ جتنے بھی ہمارے شاگرد ہیں وہ تمام کے تمام شاگرد نہ صرف اپنی لیول آف ایجوکیشن کو سیکھ سکیں, بلکہ اسی لیول آف ایجوکیشن سے ایک بار سیکھنے کے بعد وہ اس کو آگے کی طرف ایسے پرفارم کرے کہ ان کی جنرل لائف, ان کی اکیڈیمک لائف, ان کی پروفیشنل لائف, یہ ساری کی ساری کریٹ ہو, اور کریشن کے ساتھ ساتھ وہ اس کے اندر کریٹیوٹی کو بڑھائے. آئی تھنک دیٹ ہماری اکیڈیمک اسٹڈیز اور پروفیشنل اسٹڈیز دونوں کے اندر یہ چیز آئی تھنک اسکول, کالج, یونیورسٹی اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پروفیشنل تعلیم ڈلیور کرنے والے ادارے ہیں, ان تمام اداروں کے اندر اس بات کو امپورٹنٹ زیادہ کریں. This is the answer to your question. Very comprehensive. Thank you, sir. Over to you, Hamid Talash. Yeah, respected sir, would you mind repeating your question? Sir, میرا کوشچن یہ تھا آپ سے, جب ایک نیا بچہ آتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ انگلش لینگویج سیکھے, تو اس کو کہاں سے سٹارٹ لینا چاہیے, کہاں سے اس کو اپنی جرنی سٹارٹ کرنی چاہیے, آپ کی کیا رائے ان کے لیے کہ ان کو کیسے اپنی جرنی کا آغاز کرنا چاہیے؟ Thank you so much for asking such an amazing question.
It might be the problem to many students while they're coming here to the University of Spoken English and they want to take admission, or they want to be a part of any other institution and they want to learn English as a foreign language. Sir Amar has given you the brief, detailed answer. It was great to hear from him. I would like to mention few things that whenever we are going to the English language classes as a learner, or when learners are coming to the English language classes or institutions and they want to be a part of our classes, so we are having the criteria of assessment test. We do the proper assessment, and after the assessment we are going to take students to the specific classroom that they need to be there. We understand that the student is, like for DPL, they want to improve the specific, 6 major skills of English language. Besides that, like if they are coming only to improve their proficiency or fluency, we are going to give them the conversation or communication classes. So it depends. Now, assessment is the first thing. Second thing is when assessment, like an instructor is going to assess a student of EFL, the student must not do argument, and the student must admit and accept that the teacher has, done the proper assessment. And after the assessment, they should go to the appropriate classes, and their journey of learning starts from there. So after that, it depends on the teacher and the management that how are they going to give, what kind of environment they're trying to give, and how they're going to deal the students inside the classroom. And in the classroom, then we are having different techniques of teaching and instructing students of different levels, beginners, intermediate, higher, advanced, higher students. थैंक यू। अच्छा सर, एक और प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे पास भी पेश आई है, आपने भी उनको खुद एक्सपीरियंस किया होगा। हमारे पास जब स्टूडेंट्स जब डिफरेंट कल्चर से आते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको कैसे एक ESL के जो टीचर वो उनको एडजस्ट कर सकता है, क्योंकि काफी मुश्किल हो जाता है अगर आपसे आपके पास जो है 3 से 4 लैंग्वेज बोलने वाले स्टूडेंट्स हो, तो हाउ डू यू गाइस टैकल इट? अमर साहब, ओवर टू यू फर्स्ट। how to tackle how to I'm sorry, I didn't understand your question. Sir, Multicultural students, how to tackle the students of different cultures. exactly, yes. sir. See, English का एक word है, that word is called as a diversified environment. ये जो word है diversification या learning the demographics, this is really very important, and it is of an utmost importance, of a very high importance. किसी भी क्लासरूम के अंदर एक टीचर की सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वो न सिर्फ अपने लेक्चर को आगे की तरफ लेकर चले, वो न सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को या स्टूडेंट्स के साथ जो लर्निंग है, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, न सिर्फ इन पार्टिसिपेंट्स को अपने साथ आगे की तरफ लेकर चले, बल्कि इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही क्रिएट्स अ क्लासरूम कल्चर व्हिच इज यूनिक इन इट्स ओन। ये जो कल्चर क्रिएट होता है क्लास के अंदर, एक लर्निंग कल्चर जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलेशन, और वो एक रिलेशन इज द टीचिंग एंड ये जो टीचिंग एंड लर्निंग का जो ये कनेक्शन है, इन विच देयर इज अ वेरी फ्रेंडली मैच दैट इज गोइंग ऑन एंड अ वेरी फ्रेंडली डिस्कशन और अ फ्रेंडली कम्युनिकेशन और अ फ्रेंडली लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट इज गोइंग ऑन, उसमें दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट teacher creates a kind of environment which is highly oriented with the cultures. अब ये जो cultural environment है जिसमें students मुख्तलिफ level के ऊपर participate करते रहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को सीखने के लिए इंटरनल मीन्स की जरूरत पड़ती है, कुछ स्टूडेंट्स को सीखने के लिए एक्सटर्नल मीन्स की जरूरत पड़ती है। बाय इंटरनल मीन्स आई मीन टू से दैट वो सिर्फ और सिर्फ क्लास की डिस्कशन से सीखते हैं। बाय एक्सटर्नल मीन आई डू मीन टू से दैट कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, इफ यू रिमेंबर हामिद तलाश, वी डिस्कस दिस थिंग इन द ट्रेनिंग लास्ट टाइम आल्सो, दैट देयर आर 3 टाइप ऑफ लर्नर्स व्हिच आर कॉल्ड एज बैक लर्नर्स। बहुत बड़ी रिसर्च उसके ऊपर लिखी गई है। वी फॉर विजुअल, A for oral, and K for kinesthetics. Visual are those students who learn by seeing, mean by watching, right? Means that you have to play something to them by means of videos, by means of some images, by means of some something that has got some kind of some kind of visual effects.
सेकंड वन इज द ओरल स्टूडेंट्स, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो तब तक नहीं सीख सकते जब तक उनको कोई स्टूडेंट पढ़ाए ना, जब तक उनके सामने कोई बोले ना। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि ओरल सिस्टम में, और तीसरे जो टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हैं दे आर कॉल्ड एज किनेस्थेटिक स्टूडेंट्स। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि तब तक नहीं सीख सकते जब तक कि कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली परफॉर्म, means that by means of doing presentation, by means of doing the role plays, by means of doing some kind of activities in the class. तो एक कल्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए इट इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट कि एक टीचर क्लास के अंदर हर एक स्टूडेंट को डिफरेंटली समझे, लेकिन उस डिफरेंटली समझने से पहले दिस इज रियली वेरी इम्पोर्टेंट कि एक टीचर अपने क्लास के अंदर सबसे पहला जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करे, दैट इज कॉल्ड एज द क्लासरूम कल्चर। अब ये क्लासरूम कल्चर इज वेयर वी आर सिटिंग ऑल टुगेदर एंड देयर इज ओनली वन रिलेशनशिप, एंड दैट वन रिलेशनशिप इज टीचिंग एंड लर्निंग, जिसे मैंने बात की लेजॉन की। जब ये लेजॉन क्रिएट हो जाता है, once that leson has been created, after creating the leson, then the students start becoming and they start feeling comfortable, representing their culture, representing their learnings, representing their values, representing their, every single thing. This is really very important. This is really very important. हमें तलाश चूंकि मैनेजमेंट साइंसेज के स्टूडेंट हैं, और मैं जब उनके साथ बैठता हूँ तो हमारी डिस्कशन ज़्यादातर मैनेजमेंट साइंसेज के ऊपर ही होती है। So he better understands this thing. He better knows this thing that when it is about the classroom management, then the language barriers are removed by means of creating, first of all, the classroom environment. And that classroom environment is where we let all the students speak, we let all the students observe, we let all the students create, we let all the students represent and present, and we let the students perform the way they want to perform. And this is how a team is created. Once a team has been created, right after that, we make the students comfortable in their own domain. We let them play their own game in their own. So I think that classroom को culture को students के मुख्तलिफ culture को समझने से पहले, this is really very important कि students classroom के अंदर बैठे हुए उस एक culture को समझें, which is called as the teaching learning. So I think that describes and explains your answer. Thank you, sir. Okay, sir. Hamid Talash, over to you. So it depends that, if we go for types of culture and diversity in the classroom, so we are having on the race base, on the authenticity base, on the base of religion, some students who are coming here, language barriers, like students who are coming from Afghanistan, from Uzbekistan, I mean, Uzbek students, Turkmen students from Turkmenistan, and some students, who don't understand the second and third language of us, I mean, to translate them. This is also one barrier of socio-economic status. The next one is, gender identification. Depends that what kind of students are we having in the class, is Sir Amar described it in detail. It is very difficult and easy both. Difficult for those who are not trained for it, and easy for those who are trained for it. If we see, we are going to, like in the past we did Delta course, and now we are having Celta course for teachers of English language, to teach them how to tackle the diversified environment in the class, the multicultural environment in the class, from different culture. When students are coming, how to identify their need and how to fulfill their need, if not completely, but to reach to the level of achievement. So it's easy to create the environment, but for that we need to be trained. And besides that, a teacher must know the need of the student, and administration should play vital role, that the teachers who are teaching to multicultural students in the beginner level, it is very important to have a teacher who must have command over different languages that they are speaking in the class. And second thing is that they must take care of the teachers who must not get irritated and easily hypered.
in the beginner level. And intermediate and advanced level, then it's becoming easy because then we are going to speak English in a medium level. Then it's not becoming a difficult job for them to understand. But in beginner level, is we are having system here. Mashallah, our teachers who are in beginner levels, they are better. Why? Because the administration, they came to know about the need of the student and they have provided the teachers like that. So environment in the class depends on the teachers, capabilities too, and training and development too. Sir Amar may know about it very well. He knows that from so long we are having training and development classes for especially for beginner teachers, because they are teaching on the root level, and they are very important. Students, they don't know, like if you teach them something in English, you need to translate it to Urdu, to Persian, to Pashto, and what kind of classes do you have that you are going to go for it. That's important. थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन था, एक टीचर ने किया था हमसे, और उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारे पास फर्ज करें एक ऐसा बच्चा आता है या एक ऐसा स्टूडेंट आता है जिनके एजुकेशनल बैकग्राउंड बिल्कुल ना हो, जिन्होंने बिल्कुल ना मैट्रिक किया हो, जो बिल्कुल स्कूल ना गया हो, तो आप उनको कैसे टीच करते हैं? अच्छा, ये तो should I answer it or sir? Yes, please, Ahmad? sir. Yes, sir. Please. Yeah, it is like challenging. ये थोड़ा challenging होता है. I just saw a comment. The student is saying that we don't understand few things. So, what if I go in Pashto and Sir Amar go in Urdu? So it will be a better fine. Yeah, that would be a great idea. Alright. Important خبره دا ده چې کم سټوډنټان چې دلته راځي او د هغوی educational background نه وي، نو دا خو به لږ difficult وي چې هغوی دپاره انګلیش یې زده کړي. هغه به ډېر د بګنر نه ځي، هغوی به د بیسکس خپل کلیر کوي. هغوی به په الفابیټس باندې چې کوم دی کم اړ حاصلوي، after alphabets لږ words به زده کوي، های هیلو به په انګلیش کې زده کوي. هغې نه پس به بیا هغه یو کلاس روم ته ځي. نو داسې نه وي چې یاره په یو کلاس روم کې یو سټوډنټ چې د هغه اکیډمیک بیکګراوند شته او یو سټوډنټ چې دغه اکیډمیک بیکګراوند نشته، هغه دواړه په یو کلاس کې کېنولی شي. If they both are sitting in one class, then there will be problem. پھر problem زیاده ہوتی ہے. نو چې پرابلم زیات وي، بیا هغه سټوډنټان چې کم په کلاس کې اکیډمیک بیکګراوند لري، هغوی به د ټیچر په لیکچر باندې پراپر نه پوهېږي. هغوی به وایي دا خو ډېر ایزي دی، خو یو سړی چې اکیډمیک بیکګراوند نه لري به وایي دا ډېر ډیفیکلټ دی. انسټیټیوشنز دپاره پکار دا وي چې دغسې سټوډنټان دپاره یو ډفرنټ کلاس ولري او یو ډفرنټ انوایرمنټ ورته بلډ کړي، تر څو د دی لیول د ایلیمنټري پرې ایلیمنټري شي او بیا هغوی هلته راشي. ولې زموږ په ایلیمنټري پرې ایلیمنټري کلاس کې چې کوم سټوډنټان وي د هغوی اکیډمیک بیکګراوند وي، د هغوی الفابیټس، ورډز، انډرسټینډینګ، سنټینس جوړول دی باندې پوهېږي. difficult نه دی، ایزي دی. کوېسچن دومره پورې مو چې یاره کولی شي، why not? Everything is possible. It's possible. Language learning is easy. I taught to the students. Sir Amar هم دته پته وي، دی به هم ډېر سټوډنټان تاسو ټیچ کړي وي. ما سره سټوډنټ و چې هغه چاینا کې کاروبار کولو، هغه یو بزنسمین و، هغه ایجوکیشن نه درلودو، ماشاءالله 1.5 year کې هغه ډېر لرنینګ کړی و. هغه به خپل کمیونیکیشن بیا چې کوم د انګلیش کې کولو، خپل بزنس دپاره. Yes, Amar Sohail Saab, your perspective, please. Okay, can you please repeat your question? सर, अक्सर हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं होता, और वो चाहते हैं कि इंग्लिश सीखे, तो वो कितना चैलेंजिंग होता है एक टीचर के लिए और एक स्टूडेंट के लिए? See, here I'll talk about the mother of learning, right? The most important thing that we need to know that how learning is created. Learning is start कैसे? जब एक, when we were kids, little kids, so the first learning that we had was the learning from observation, right? Now what is learning from observation? एक छोटा बच्चा है, वो कैसे सीखता है, वो कौन से आइडियाज से सीखता है, वो किन लेवल्स के ऊपर चल के सीखता है. The most important thing that we learn is to learn from the observation. What is your surrounding teaching you? What is your surrounding telling you? What is your surrounding trying to make you understand? Right? आप अपने सराउंडिंग से किस तरीके से सीखते हैं, आप अपने माहौल से किस तरीके से सीखते हैं, आपका जो ये इन्वायरमेंट जो आप लोगों का क्रिएटेड हुआ है, द लर्निंग इन्वायरमेंट जो क्रिएटेड है, ये लर्निंग इन्वायरमेंट आपको कैसे सिखाता है, इसके अंदर कितने लेवल के फ्रेगमेंट्स इंक्लूडेड हैं, और जो लेवल ऑफ फ्रेगमेंट्स इंक्लूडेड है
वो आपको क्या बताने की कोशिश करता है? एक छोटा सा बच्चा होता है, जब आप छोटे से बच्चे को देखो तो वो रोटी को कैसे किस नाम से बुलाता है, राइट? वो पानी अगर उसको चाहिए तो वो किस नाम से बुलाता है? अगर उसको रोना आ चुका है तो वो अपने रोने को किस तरीके से करके एक्सप्लेन कर रहा है, उसके रोने के कितने वर्जन्स है, कितने टाइप्स है, कितने लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन से वो अपने बात को डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है। जब उससे आप बात करते हैं तो वो किस तरीके से आपकी बातों को रिसीव करता है। See, the nature is teaching us all these things: how to deal with kids, how to deal with your classmates, how to deal with your students, and how to deal with students who actually don't have an education. अब यहाँ पे बात आती है इसकी कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनका कोई एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं है, वो लैंग्वेज कैसे सीखें? सर, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई लेट यू नो दैट कि लैंग्वेज को सीखने के लिए एकेडमिक स्टडीज की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे फारसी आती है, ما فارسی را میفهمم، فارسی را گپ میزنم. I don't have studied, I have not studied the Farsi academically. Yes, میں پشتو بول سکتا ہوں، زه پښتو کې خبرې کولی شم، پښتو ډېر ښکلی راله راځي، پښتو کې زه خپل ځان ایکسپلین کولی شم، خو ما پښتو کې کله اکیډمیک سټډیز نه کړي، right? So this is not important that how do you learn these languages. uh, this is important that what are the strategies on the basis of which you are learning the education, the communication. यहाँ पे जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आई थिंक मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन डिटेल में करना चाहूँगा, वो ये है कि हमारे पास ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो आते हैं लैंग्वेज सीखने के लिए, वो लैंग्वेज सीखने के लिए क्यों आते हैं? यूजुअली स्पीकिंग टेस्ट में आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, जब हमारे पास कोई लैंग्वेज सीखने के लिए आते हैं, तो लैंग्वेज सीखने के लिए अगर आते हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसलिए लैंग्वेज सीखने के लिए आते हैं बिकॉज दिस इज़ अ वेरी बिग फियर। ये उनका एक बहुत बड़ा डर है। डर क्या है? डर ये है कि कहीं पे हम इंग्लिश में फेल ना हो जाए, कहीं पर हम इंग्लिश को बोलते वक्त गलती न कर बैठे, कहीं पर अगर मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई, तो अगर मैंने कोई मिस्टेक कर दी तो व्हाट इफ अगर लोग मेरे ऊपर हंसना शुरू कर दिया। तो आप याद रखें और दिस थिंग मस्ट बी रिमेम्बर्ड कि कोई भी काम इस दुनिया में डर और खौफ की वजह से नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि जब आप किसी भी काम को डर से स्टार्ट करेंगे तो उसका एंड भी आपको डर पे ही मिलेगा। आप किसी काम को खौफ से स्टार्ट करते हैं तो वो काम आपको खौफ के ऊपर ही मिलेगा। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, कोई स्टूडेंट आपके पास, तो एक टीचर की सबसे बड़ी मिसाल और सबसे बड़ी उसकी जो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि वो कैसे अपने स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट और अपने स्टूडेंट्स का लेसन क्लासरूम के अंदर क्रिएट करता है, और क्रिएट करने के साथ साथ वो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को कैसे, यू नो, लाइक देयर इज वन थिंग व्हिच इज कॉल्ड एज एन इम्पैक्ट क्रिएशन। वो कैसे अपने स्टूडेंट्स के इम्पैक्ट को क्रिएट करता है, और इम्पैक्ट को क्रिएट करने के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम ही रेजेस, he keeps on raising the level of interest, और वो level of interest को रेज करता रहता है। तो आई थिंक दैट अनपढ़ स्टूडेंट जिसको बिल्कुल एजुकेशन नहीं आती है, जिनको जिनको बिल्कुल एजुकेशन नहीं से एकेडमिक स्टडीज बिल्कुल नहीं है, वो भी एक लैंग्वेज को बड़ा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यार इंग्लिश लैंग्वेज का डर है उसको आपने निकालना है अपने जहनों से। यू नो, once a very high intellectual person said that सबसे पहले आपने घबराना नहीं। ये जो घबराहट, इसको आप लोगों ने अपने क्लासरूम से निकालना है। जिस दिन ये घबराहट क्लास से निकल गई, उस दिन आई थिंक दैट स्टूडेंट्स की लर्निंग जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाती है। उसके अंदर एक इफेक्ट ऐड हो जाता है जिसको हम केमिस्ट्री में कैटलिस्ट कहते हैं, which increases the rate of reactions. क्लासरूम के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है ऑफ लर्निंग एंड री लर्निंग, एक्सप्लेनिंग एंड री एक्सप्लेनिंग, ये बहुत ज़्यादा तेजी से आएगी। तो आई थिंक दैट इंटरेस्ट को अगर डेवलप किया जाए तो एकेडमिक स्टडीज की जरूरत लैंग्वेज लर्निंग के लिए। Yeah. ऑलराइट सर, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन ये था, कुछ स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर हम वोकैबुलरीज तो याद करते हैं बट वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट देम और वी कैन नॉट यूज देम इन आवर सेंटेंसेस। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे सर हामिद तलाश? अच्छा, वोकेबलरी के लिए डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं। माय सजेशन इज व्हेन यू आर लर्निंग वोकेबलरी, ट्राई टू लर्न इट ऑन contextual basis.
आप रीडिंग के थ्रू वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं टू रीड मोर। और आजकल तो दुनिया रीडिंग से ज़्यादा जो है ऑडियो पे चली जा रही है। लाइक मेनी पीपल आर गोइंग टू गो फॉर ऑडियो बुक्स। सो बेहतर है कि हम जो है ऑडियो सुनते हैं, उसको जो बार बार सुनते हैं तो वो वर्ड्स हम सीखते हैं। सेकेंड थिंग, डिफरेंट गेम्स है। देयर आर वोकेबलरी गेम्स। ज़्यादातर लोग वोकेबलरी गेम्स खेलते हैं तो उसके थ्रू अपने वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। ज़्यादातर दे आर गोइंग टू गो फॉर द रीडिंग। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गो फॉर राइटिंग। तो वो ज़्यादा राइटिंग करते हैं, तब वोकेबलरी इंसान भूलता नहीं है। इट इज़ हेयर, ये तो इंसान के दिमाग में होता है, स्टोर हो जाता है। वंस यू सेव समथिंग दैट इज़ नॉट बीइंग एनीवेयर एल्स। लेकिन जिस एनवायरनमेंट में आप जाते हैं, जब वो इवेंट होता है और जब आप बात करते हैं, फिर आप रिमाइंड करते हैं, ऐसे ही तो नहीं आती आपके जहन में। एंड सेकेंडली, वी ओनली स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासरूम्स। अच्छा, मैंने स्टूडेंट्स को तो मेरा सजेशन यहाँ से ये है that they should not speak in Urdu or Pashto in any other language while they're coming to the English language classes. It's a good idea to communicate in English. If you are communicating in English, you'll be able to improve your English. Or and if you are communicating in Pashto and you are not communicating the same thing to your friends, to your colleagues, then it's becoming very difficult. एक स्टूडेंट मेरे पास आया और मुझे कहा, सर जी, हाउ टू इम्प्रूव माई इंग्लिश वोकेबलरी। मैंने कहा, ईदर गो फॉर रीडिंग, writing, practicing. We said, "Yeah, practice basing ko." I said, "They all are practicing." And in the end, I told him that the best way is, before you are coming to the class and you learn few words, then here in the institution, just meet your friends and tell them, "Do you know, today I have learned these words. This word means this. It is used in the sentence like this." ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट एक दिन में, like in one day, they are going to learn 50 words and the next day they are not learning any word. It's a good idea to learn 2-3 words a day. You will improve your vocabulary, and practicing is very important. And you will learn and improve it that way, and you'll remember it. All right, sir. Sir, how would you respond to this question, Amar Saab? Vocabulary learning, right? Yes. See, I think that vocabulary, यार ये बड़ा अजीब सा वर्ड है. Vocabulary. Vocabulary learning, vocabulary बहुत सारे यो उस्ताद हो हमें तालाश से प्लेयर्स यार फेवरेट टीचर हो नियाजी से नागा तकरीबन I think that तालाश से remembers him. तो उन्होंने इस तरह किया कि एक प्रोनाउंसिएशन की I think there is some issue with Sir Amar Suhail's internet. Yes, sir. Did you see the questions on the screen that Miss Madam Alila just asked? Before going to that question, there is a student who is saying that why students do not promote an English language in 1 month. Yes, sir. My answer to this gentleman is that it is easy to promote in 1 month, but what kind of promotion do you talk about? If you think that students who are learning in elementary or pre-elementary level and we should promote them in 1 month, it's very difficult for them. Teachers, they know how to judge the students. Assessment test is the better option to go for it. And besides that, अगर assessment test में एक student proper marks लेता है और proper perform करता है और उनकी book complete हो जाती है, बेटा, you need to understand one thing. The set of book that you are having, वो proper weeks पे divided होता है. ऐसा नहीं होता कि 1 month में आप पूरे book को cover करते हैं. अगर आप जो है pre-elementary और elementary के level पे देख ले, then it's easy to cover the 1 book or 2 books in 2 months. तो 1 month में तो book cover नहीं होता, इसलिए भी teacher promotion नहीं करता. And second thing is about the pre-starter, starter, intermediate and higher level. उन levels पे हम इसलिए भी promotion जो है 1 month में नहीं करते because वो course 4 month का है. 16 units है तो 4 month का course बनता है. अगर आप पूरे course को पढ़ते नहीं हैं and you're going to go for promotion,
that is something which is becoming then problematic, and many students, like, will not learn and improve. हमारा यहाँ पर जो है सबका मकसद यही है to improve. The need is to improve your English, and we want you to improve effectively and to have positive impacts in the coming time. All right, sir. We would go to the last questions that Madam Manila asked. Mhm. May I repeat that? Okay, it's about teaching while speaking correction or post speaking corrections. Yes, sir. Cool. It's like against the linguistic rules. ये तो linguistic rules के जो है खिलाफ भी है. When students are communicating and you stop them between or in the mid and you're asking them that to correct this and that, it's good idea to go for post correction while speaking. You need to जब student अगर आप teacher है, so it's good idea to just note down the mistakes of the students while they are speaking or presenting or they are doing the conversation between each other. बेहतर बात यह है कि आप जो है उनकी पूरे जो है mistakes को correct करके, and in the end you need to hand over them that these were the mistakes here, you said this, you shouldn't have said this, you would have said this. So that's how it's best idea. And second thing is student humiliate भी नहीं होगा, demotivate भी नहीं होगा. So अगर like मिड में हम उनको स्टॉप करते हैं तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, they will forget the ideas. Yeah, if the student is not committing mistakes and they are committing blunders, then it's good idea to go for correcting them in the mid and stop them and tell them no, it's not like this, it's like this. ये थोड़ा unethical भी है linguistic में, so it's good idea to go for post correction. So the next question is in front of you. If you speak Delhi, how long will it take for us to speak fluently? Yeah, fluency is a different, approach. Depends that who you are speaking to. Are you communicating to yourself, or you are communicating to the teachers, or you are communicating, in the classroom to your level, or the people who are upper in level than you? It depends then. तो ऐसा नहीं होता कि आप जो है स्पीकिंग खुद करते हैं और इम्प्रूव होती है. सो इट्स अ बिट डिफिकल्ट. सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी है, बट यू नीड टू हैव अ गाइडर टू गो फॉर इट. Within a year, if you're a beginner, you can improve. Alright, sir. अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. हमारे पास यहाँ पे एक टीचर हैं. Sir, उनका ये कहना है, is he's not here. I guess he is having some problem with his internet. please, Sir, please. सर उनका कहना है कि एक बेहतरीन ESL टीचर जो है वो अपनी क्लास का आगाज कैसे करता है ऑन मंडेज स्पेशली. The best thing is, I'm not, among the best teachers, but I would like to say that effective teacher is a teacher who must start with the proper lesson plan, और जो पूरी वीक में पढ़ाता है उसका एक स्टोरी क्रिएट कर दे क्लास में, और वो स्टूडेंट को जो दे जिसको हम बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द यूनिट कहते हैं. यूनिट का बैकग्राउंड नॉलेज किसी स्टोरी की शक्ल में, किसी इवेंट की शक्ल में अगर आप स्टूडेंट को देते हैं, इट विल हेल्प एवरीवन टू अंडरस्टैंड थिंग्स अप्रोप्रिएटली. वो फिर स्टूडेंट जो है इजीली पूरी वीक जब उसको पढ़ते हैं हर एक फंक्शन को उस यूनिट में, दे विल अंडरस्टैंड इट इजीली, क्योंकि उनको ऑलरेडी बैकग्राउंड नॉलेज क्लियर हो चुका है फर्स्ट डे में. या तो स्टोरी पे लोग जाते हैं या कोई किसी जो है इवेंट को क्रिएट करते हैं दैट इट हैपेंड and it happened like this, या ऐसे भी होता है, शॉपिंग पे है, किस कंडीशंस पे आप बात करते हैं, हर यूनिट प्रॉपर कंडीशन होती है. So teachers, they go for it. And lesson plan is very important for a teacher. उसके lesson plans में होना चाहिए. Usually हम English language के teachers जो है warm up करते हैं, but Monday के दिन the way I am going to start the class, उसमें ये होता है that I ask them about their weekend, and then I am going to go for explanation of my whole week unit. But I'm not going to go for direct explanation that what we are going to study. An indirect review I'm giving to the students there. I mean, that might be the story, that might be an event, it might be a short, like paragraph that I'm going to explain to them things. So it depends करता है हर एक teacher के lesson plan पे that how are they going to plan their class.
Thank you, sir. So, sir, we would like to wind up. Do you like to leave a message for our teachers who are listening us or watching Yeah, us? my message for teachers and students both. Sir Amar is here, thank God. I'm really My sorry. message. Yeah, it's There is a okay. problem with the internet here in Islamabad. As Yeah, you yeah. better understand, the Yes. conditions in the past, because of that, there is a problem with the internet. Yeah, Thank God I got it recovered. I'm really sorry. It's okay, it's sir. okay, sir. So, sir was asking about the last message to the students and teachers. To the teachers, my message is that try your level best to teach from heart, and it's good idea to understand and identify the need of the students and teach them. It will help you to teach them better, and it will help the students to improve effectively. And to these students, my suggestion is to go for peer assessment and self assessment in the end of every month. हर month के end में मतलब د هر میاشت په اخر کې باید سټوډنټان په دې باندې فوکس وکړي چې د خپل فرند سره ملاويږي د غینه چې کوم د ایډیاز اخلي that how much I improve classmate peer assessment or self assessment ته د لاړ شي where I was and how much I improved هغه improvement ورته ښکاري د سنوي چې improvement نه راځي improvement is taking place so teachers should motivate the students to go for peer assessment and self assessment. Uh, yes, Amar Saab, over to you. Ji, can you play? Okay, Yeah. I thought that All we're right, talking about sir. There are some teachers, watching, and then there are some students. They're also watching. So, what is your last message for them? my last message to all the language learners. Okay, I saw a couple of comments that the students gave here. Some of them were talking about vocabulary, some of them were talking about language learning, some of them were talking about the importance of languages, some of them were complaining that they are not understanding in the class. I read all the comments during the short break. What I believe is फॉर लैंग्वेज लर्निंग उर्दू में बात कर लूंगा ताकि स्टूडेंट्स को ज्यादा अच्छे तरीके से Exactly, समझ आ sir. जाए। ये जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं एक लैंग्वेज को सीखने के लिए दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा स्टूडेंट को ये बात करता हूँ कि जब भी आप किसी भी क्लास में जाते हैं तो दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप क्लास रूम में इसलिए मत जाएं कि आप एक लैंग्वेज को सीखने के लिए जा रहे हैं। जिस दिन आप लैंग्वेज को सीखने के लिए जा रहे हैं तो आप फिर कन्फाइंड हो जाते हैं, आप फिर लिमिटेड हो जाते हैं। लिमिटेड कैसे होते हैं? लिमिटेड हो जाते हैं नंबर 1 विकेबलरी सीखने में, लिमिटेड हो जाते हैं नंबर 2 ग्रामर सीखने में, टेंसेस सीखने में। वो लिमिटेड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस है। आप लिमिटेड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस के थ्रू ही आप सीख सकते हैं और वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। दैट कैन बी अ वेरी गुड अप्रोच, एन एक्सीलेंट अप्रोच, बट फॉर लैंग्वेज लर्निंग इट इज गुड। सी देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स। ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं या ट्रेनर्स हैं, जरा इस बात को काइंडली थोड़ा और से समझने की कोशिश करें। वो ये है कि देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट नंबर 1 इज लैंग्वेज लर्निंग, किसी जबान को सीखना, जिसमें हम सिंपली एक लैंग्वेज को सीख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं, सेहत अच्छी है? बिल्कुल, जज़ाकल्लाह ठीक। नाउ दिस इज अ लैंग्वेज लर्निंग, जिसमें हम लैंग्वेज को लर्न करते हैं। सेकंड थिंग इज लैंग्वेज एक्विजिशन। जिस दिन स्टूडेंट्स लैंग्वेज एक्विजिशन के ऊपर काम शुरू कर देंगे, लैंग्वेज एक्विजिशन मीन्स वो लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। एक्वायर करने का क्या मतलब है कि वो लैंग्वेज में, उर्दू में एक वर्ड है अपने आप को ढाल लेना। जब वो लैंग्वेज को ढाल लेते हैं, दैट दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, दे डू नॉट स्पीक अ लैंग्वेज, दे लिव दैट लैंग्वेज। And this is really very important. Once you start living the language, means that you will actually start understanding the real crux of the language. कि एक लैंग्वेज अगर बोली जा रही है तो वो उस लैंग्वेज में आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, कौन से डायरेक्टिव से आप बोल रहे हैं, आपकी वर्बल कम्युनिकेशन क्या कहती है, आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या कहती है। मे बी जो वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक लैंग्वेज के अंदर है, दूसरे लैंग्वेज के अंदर शायद उसका मीनिंग अलग हो। यस, पहला जो मीनिंग है, आप उर्दू बोल रहे हैं, उर्दू में आप लेट्स सपोज कोई एक वर्ड है, उसका वर्ड का मीनिंग पश्तो के किसी भी वर्ड के मीनिंग से अलग है। यस,
किसी एक वर्ड का एक मीनिंग है, किसी एक लैंग्वेज में एक वर्ड का एक मीनिंग है, उस वर्ड का दूसरे वर्ड में दूसरा मीनिंग है। तो जिस दिन स्टूडेंट्स ये लैंग्वेज एक्विजिशन को अक्वायर करने की कोशिश करते हैं, तो यही स्टूडेंट्स न सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस को देखते हैं, न सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं, न सिर्फ अपनी लर्निंग को देखते हैं, बल्कि उसके साथ साथ उनको ये भी समझ आती रहती है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स में लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन का क्या करना है। जिस दिन स्टूडेंट्स अपनी लैंग्वेज एक्विजिशन को समझने की कोशिश उन्होंने कर ली, इट बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास कुछ लिटरेचर के स्टूडेंट्स आए थे, इंग्लिश लिटरेचर के, तो वो ये कह रहे थे कि सर, वी हैव लर्न लिटरेचर, वी हैव लर्न लिंग्विस्टिक्स, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द वेरी क्रक्स ऑफ learning, of getting or acquiring language. उनके साथ मैंने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, और वो जो कॉन्सेप्ट था, दैट वाज कॉल्ड एज कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स। एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है, अगर कोई प्रोफेसर इस वक्त इंग्लिश लिटरेचर के मुझे सुन रहे हैं तो वो शायद इस टर्म को बहुत डिटेल में समझेंगे भी, और वो ऑलरेडी उसको जानते भी होंगे। कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स लिंग्विस्टिक्स का एक ऐसा फील्ड ऑफ स्टडी है जिसमें लैंग्वेज एक्विजिशन के ऊपर इस तरीके से फोकस किया गया है कि एक लैंग्वेज जो है उसके अंदर एक इंसान की कॉग्निटिव एबिलिटीज को इम्प्रूव करने का क्या किरदार है। अगर वो स्टूडेंट लैंग्वेज को लर्न कर लेता है तो उसने लैंग्वेज को कैसे लर्न किया? सिर्फ जनरली एक लैंग्वेज लर्न किया, सिर्फ एकेडमिकली उसने ग्रामर या वोकैबुलरी सीखी, या नहीं, उसने उसको प्रोफेशनल हद तक लेकर गया। इफ आई एम डिलीवरिंग अ प्रेजेंटेशन, राइट, अगर मैं एक प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहा हूं तो मेरी जो प्रेजेंटेशन डिलीवर हो रही है, ये प्रेजेंटेशन क्या रियल कॉर्पोरेट मीन्स के अंदर है? क्या ये रियल उस डायरेक्शन, उस पाथ, उस रोड को मीट करती है? अगर करती है, then I'm a perfectly correct speaker. All the psychologists can endorse that. All the sociologists can endorse that. All the linguistics, literature experts can endorse that. तो किसी भी क्लास के अंदर अगर एक टीचर या ट्रेनर कोशिश ये करता है कि वो किसी तरीके से वो अपने स्टूडेंट्स को लैंग्वेज सिखाए, तो लैंग्वेज सिखाना बंद करें। खुदारा, जब आप लैंग्वेज सिखाते हैं तो आप स्टूडेंट को कन्फाइन कर देते हैं एक सोच के अंदर, एक वर्ल्ड पूल के अंदर, कि वो सिर्फ ये सोचता रहे दल तबजा सिंपल प्रेजेंट वैम का जब प्रेजेंट परफेक्ट बलगोम का सिंपल पास बोल दल तबजा सवे। तो जब स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो गया, तो एज लॉन्ग एज द एकेडमिक स्टडीज आर कंसर्न, इट्स गुड, बट एज फार एज द प्रोफेशनल एजुकेशन इज कंसर्न, तो फिर आप जब अपनी प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे हैं तो आपके स्टूडेंट्स, जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो लोग आपको समझ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उस ग्रामर के एक वर्ल्ड पूल में ही डिस्टर्ब रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, क्या कहते हैं, डिप्रेस्ड रहेंगे, एंग्शियस रहेंगे, एंग्शियस नहीं एंजाइटी में रहेंगे। क्यों एंजाइटी में रहेंगे? कि यार ये बंदा अपनी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने, ये बंदा जो है ये क्या कहते हैं उसको कम्युनिकेशन स्किल करने की कोशिश कर रहा है। ही विल ट्राई हिज लेवल बेस्ट टू अंडरस्टैंड, बट एट द एंड ऑफ द डे, यू नो, डेफिनेटली ही flew here and there in search of water and there wasn't any water at all. So it is really very important कि इस चौराहे से निकल कर जितने भी ट्रेनर्स हैं, जितने भी कम्युनिकेशन स्किल्स के एक्सपर्ट हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को इस बात के ऊपर फोकस कराएं कि देखो बेटा, आपने लर्निंग करनी है तो आपने लैंग्वेज लर्निंग के ऊपर काम नहीं करना, आपने लैंग्वेज एक्विजिशन के ऊपर काम करना है। रेमेडी का वर्ड मैंने कब यूज करना है, सॉल्यूशन का वर्ड मैंने कब यूज करना है, और ट्रीटमेंट का वर्ड मैंने कब यूज करना है। ये तमाम वर्ड्स के जो अपने अपने सेंसेस हैं, इन सेंसेस को समझने का मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन है, which the students can better listen and they can better they can understand. So I think that trainers को ये खास तौर पे कि वो अपने स्टूडेंट्स को न सिर्फ लैंग्वेज लर्निंग के ऊपर काम करें, बल्कि लैंग्वेज लर्निंग के साथ साथ लैंग्वेज एक्विजिशन and try to keep the environment of the class comfortable as much as it is comfortable. So you know there will be a lot of water to go, right? Thank you so much, sir, for giving us your precious time. And Hamid Tala Saab, thank you so much for being with us.
and the time is up. You all must be having different activities because this is such a day. Yeah. All right, guys. So thanks for watching, and inshallah, we'll be back with another episode next such a day. You all have a great weekend and stay blessed and Allah Hafiz. Thank you so much. Thank you so much. Jazakallah. Jazakallah.